bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham bhajami. Advaitayachyutayanadi anantarupam Adyam Purana Purusham Navajauvanancha Vedesu Dullabhayatma Bhakto Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham bhajami. Panthastu koti satavassa sampragamya Vayorathapi manaso muni pungamanam Sappasti japrapadasimna avichintatate Govindam Adipurusham Tamaham bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham bhajami. So, today the birth appearance ceremony of Lord Krishna. In the Bhagavad Gita, the Lord says, Janma karmam me divyam jo janati tattata tattadeham punarjanmanaiti mameti kaunte. My dear Arjuna, any person who simply tries to understand about my transcendental birth or appearance and disappearance and activity, janma karma. The personality of Godhead is not niskriya, without activities. So, anyone who can understand what kind of activities the Lord has and what kind of birth He accepts, simply by understanding these two things, one gets wonderful result. What is that? Tattadeham. By quitting this body, tattadeham punarjanmanaiti, he does not take any more birth in this material world. Tattadeham punarjanmanaiti. Some of us may think that punarjanmanaiti means he becomes vanquished. No, punarjanmanaiti, but mameti. He does not come to this material world, but he comes to me, mami. Mameti means then the Supreme Personality of Godhead has got his place, abode, where we can go simply by understanding the nature of his appearance and activities. So, today is that auspicious day, Janmāṣṭamī, when Lord Krishna appeared 5,000 years ago in India.
Mathura. Those who are Indian ladies and gentlemen present, they know very well where is Mathura. It is about 90 miles south of New Delhi. The Mathura is still existing and it is eternally existing. The Krishna appeared in Mathura in his maternal uncle's house in a very precarious condition. That birthplace, Lord Krishna's birthplace, is now maintained very nicely. One who goes to India, they see. So anyway, Lord Krishna appeared on this planet 5,000 years ago. Now, Krishna says, Janmāṣṭamī divyam. Divyam means not ordinary. It should not be understood just like we take our birth. Krishna does not take his birth like us. That is also explained in the Bhagavad Gita. When Arjuna inquired from Krishna, my dear Krishna, you are speaking that formerly you spoke this yoga system of Bhagavad Gita to the sun god. That means it is millions and trillions years ago you spoke. How can I believe it? Because Krishna was contemporary to Arjuna, so he was thinking that Krishna is my friend, is my cousin, brother. How it is possible that he spoke this Bhagavad Gita yoga to sun god? So what was the reply? The reply was this, that you also appeared many times, I also appeared many times. The difference is that I can remember, you cannot remember. That is the difference between God and ordinary living creature. That we are also taking birth after birth. There are 8,400,000 species of life, and so long we are in this material world, we are cycling around this birth after birth. So Krishna's birth is not like that. Therefore Krishna says, Janmāṣṭamī divyam, jujanati tattata. Tattata means in truth, not superficially, scientifically. One who knows, he can get immediately liberation. And how one can understand the same truth, that is also explained in the Bhagavad Gita. Bhaktya mam abhijanati javan jaschami tattat. Again, the same thing, tattata, in truth. If anyone wants to know God or Krishna in truth, not superficial, then he has to undertake the process of devotion and service. Bhaktya. In another place, Krishna says, Patram pushpam phalam toyam jumi bhaktya prajachyati. Any person who gives me a little fruit, little flower, little water, but with devotion,
bhaktya. That is the only qualification. Krishna says, Taya bhaktya upuritam asnami. Because he brings it with devotion and faith and love, I eat. Krishna eats. We are offering in the temple prasadam, so he eats. Because he says, I eat. How you can say that he does not eat? Some gentleman who asked me that Swamiji, you offer prasadam in the temple, but do you think Krishna or God eats? I answered, yes, why not? He says, I eat. How you can say he does not eat? But you do not know how he eats. Due to poor fund of knowledge, you think that God does not eat. But his eating process is different. That is answered in the Brahma Samhita. Brahma Samhita, it is said, Angani yassa sakalendriya vittimanti. God's senses, Krishna's senses are as powerful as other senses. Just like I can see with my eyes, but Krishna can eat also with his eyes. That is why Angani jassa sakalendriya vittimanti. Just like there is many examples. Krishna or Vishnu, the first creation is that Garbhosai Vishnu lying on the ocean, and Brahma was created from his navel. There was a lotus stem grown from the abdomen of the Lord, and Brahma was born. Now Lakshmi, the goddess of fortune, was just sitting. But as we understand that if we beget child, we require the cooperation of wife. But here we see that wife was sitting, but he begot Brahma from the navel. This is called Sarvashaktiman. He does not require anyone's help. He can beget child, not exactly as we beget child. Therefore, Janmāṣṭamī divyam. He is within your heart. He is everywhere. He can appear from everywhere. Just like sun rises from the eastern side, it does not mean that eastern side is the mother of sun. We simply see that sun is rising from the eastern side. In this way, if we try to understand in truth, then we can understand what is God. Superficially, if we try to understand by our experimental knowledge, then it is not possible to understand God. Panthastu koti satavassa sampragamya vayo rathapi manaso munipangavaanam shappastija pravadasim na avichintatate govindamadi purisam tamaham bhajami. The Brahma Samhita says that if one stops on the chariot of air and makes progress
on the speed of mind, still one cannot understand what is God. Vedeshu dullabha adurlabha bhakto. He cannot be understood simply by studying Vedas. Traigunna Visaya Veda Nistraigunna Bhavāja. One has to transcend the position of Vedas also, then one can understand what is God or what is Krishna. So that process is explained in the Bhagavad Gita. Bhaktya mama vijanati janmāṣṭamī tattvatāṃ. So, this bhakti, devotional service of Krishna is so nice, and under that bhakti category, this Janmāṣṭamī, of course, this Janmāṣṭamī ceremony is observed by all Hindus, irrespective of becoming Vaishnava or not. This ceremony is observed in India, every home, just like in your Western countries, the Christmas is observed in every home. Similarly, Janmāṣṭamī is observed in every home. Today is a great ceremonial day. Our program is at 12 o'clock night, the Lord will take birth and we shall receive him, and just now it is 10 o'clock. For 2 hours our program will continue in Kirtan. Kirtan means sometimes chanting with music and sometimes speaking. Both of them are Kirtan. Kirtayati iti Kirtan. Whenever we glorify the Lord, that is called Kirtan. The Srimad Bhagavatam reading is also Kirtan. Abhavad Vaiyasaki Kirtane. Vaiyasaki Sukadeva Goswami, he achieved the highest perfection, liberation, simply by reciting Srimad Bhagavatam. Sri Vishnu Sri Vishnu Sabane Parikshit Maharaj, he simply heard. There are 9 processes of devotional service. Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam. Chanting, hearing, first hearing, then chant. Without hearing, nobody can chant. Savanam Kirtanam, and what sort of Savanam Kirtanam? Vishnu, of Vishnu, not anything else. Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam Dasyam Sakham Atmanivedanam. These are 9 processes of devotional service, of which Savanam, hearing, is most important. Without hearing, nobody can understand the science of God. Therefore, the Vedic mantras are called Shruti. Shruti means it is to be heard. It is not to be experimented in the laboratory. It is simply to be heard. Therefore it is called Shruti. The Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archadam Bandhanam Dasam Bandhanam, offering prayer. We also offer prayer. The other religious sect, just like the Christians, they offer prayer. The Mohammedans, they offer prayer.
So prayer, offering prayer is also one of the items of bhakti. Chanting, hearing, meditating, offering prayers, archanam, worshipping the deity in the temple, all of them are together devotional service. So out of the 9, if you can execute all the 9, it is very good, but it is not possible. So even if you can execute one item, you become perfect. It is so nice. Sri Vishnu Savane Parikshit, just like Maharaj Parikshit, he simply executed the function of hearing. He got perfection. Similarly, Abhavad Vaiyasaki Kirtane. Vaiyasaki means Sukadeva Goswami, he simply glorified the Lord. Prahlada Smarane. Prahlad Maharaj, he was simply meditating. There are many examples simply by following one principle of this devotional service, they got the highest perfection alive, liberation, back to home, back to Godhead. So, we shall invite today to speak about Krishna from our students as well as from the members who are present here. So, I shall request Janardhan to speak something about his realization of Krishna. हरे कृष्ण। तो ये जन्माष्टमी का लेक्चर है 16 अगस्त 1968 मॉन्ट्रियल का। तो इस बार भी 16 अगस्त को आ रही है, इसलिए हमने ये चूज़ कर इसमें छोटा सा लेक्चर है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी 26 मिनट ही बोले हैं, बाकी सब डिसाइपल्स बोले हैं, तो उतना हमने कवर किया। इसमें जो छोटे थोड़े कंसेप्ट्स हैं प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का जन्म एक साधारण नहीं है, दिव्य है। तो इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारा जन्म और भगवान के जन्म में अंतर है। वो क्या अंतर है, कैसे समझाते हैं प्रभुपाद जी, कैसे दिव्य है भगवान का जन्म? ध्रुव महाराज। हरे कृष्ण जी। इसमें काफ़ी सारे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अर्जुन जो है वो भूल जाते हैं, मतलब, और भगवान जो है वो भूलते नहीं है। मतलब भगवान के भी जन्म हुए हैं, अर्जुन के भी जन्म हुए, लेकिन भगवान नहीं भूले। हर जन को याद है। हाँ, हर जन को याद है। इवन उन्होंने सन गॉड को गीता मतलब सुनाई थी, लेकिन भगवान को याद था, लेकिन अर्जुन भूल गए थे। और अनदर ये बताए थे कि भगवान का जो जन्म है वो इस तरह से दिव्य है कि भगवान अपने आप मतलब नेवल से भी ब्रह्मा जी को प्रकट कर सकते हैं बिना मदर के, बिना। वो सर्वशक्तिमान का उदाहरण था। सर्वशक्तिमान वो अलग है। पहले जन्म का उदाहरण आपको। यस, एक तो प्रभुपाद जी सीधा सीधा अर्जुन वाला। यस, मतलब डायरेक्ट जन्म का तो नहीं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के जन्म को जानने से, भगवान के जन्म को तत्वतः जानने से पुनर्जन्म नैति, ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। उसका इफेक्ट बहुत वंडरफुल है।
ये भगवान के जन्म को जानने से ही वापस यहाँ जन्म नहीं होता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए दिव्य है। भगवान के जन्म को जानने से तत्वतः दिव्य इफेक्ट होता है, इफेक्ट दिव्य है उसका। और एक और प्रभुपाद जी बताए हैं यहाँ पे, there is a difference between God and ordinary living creatures, that we are also taking birth after birth. There are 84 lakh species of life. So long we are in this material world, we are cycling round birth after birth. So Krishna's birth is not like that. कृष्णा इस तरह से साइकिलिंग बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे नहीं हुए। हमें 84 लाख स्पीशीज में बाध्य होके आना पड़ता है। कृष्णा अपनी स्वेच्छा से आते हैं, जब उन्हें आना है तभी आते हैं, और जैसे आना है वैसे आते हैं। ठीक है, हम चूज नहीं करते ना, हम इस घर में पैदा होंगे, इस शरीर में पैदा होंगे, इस देश में पैदा होंगे, ये सब हमें जबरदस्ती दिया जाता है। ठीक है, कर्म अनुसार। हरे कृष्णा। आगे है कि भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः कैसे जान सकते हैं। तत्वतः लिखा था, तत्वतः वर्ड का मतलब क्या है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 2 वर्ड प्रभुपाद जी यूज करते हैं तत्वतः को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, यस, एक तो सही बोल रहा है, सुपरफिशियल नहीं है, ट्रूथ है, हरि बोल। और एक और वर्ड है, साइंटिफिकली। प्रॉपर साइंटिफिकली अंडरस्टैंड, साइंटिफिकली। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी भगवान के कर्म को बताते हैं, वो भी दिव्य है। कि जन्म तो दिव्य है, अब कर्म दिव्य है। उसमें प्रभुपाद जी क्या क्या उदाहरण दिए हैं कि कैसे उनका कर्म दिव्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भी प्रभु जी एक्टिविटीज़ का बता रहे थे कि एक तो भगवान की एक्टिविटीज़, 2 चीज़ें बोली थी, 2 थिंग्स है कि भगवान की एक्टिविटी कैसे वो एक्टिविटीज़ करते हैं, और एक था कि हाँ वही दिव्य कैसे है, वही पूछ रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल। आप सबसे पीछे बैठ के सब कुछ सुना। बोले थे कि भगवान जैसे बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम, हाँ। तो भगवान का ईटिंग भी हमारी तरह नहीं है। हाँ, भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं। हाँ, यस। उसमें श्लोक कोट करते हैं, शास्त्रों से कैसे ऑथराइज करते हैं कि भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। अंगानी यस्य सकले, हाँ, ब्रह्म संहिता का, हाँ, हर एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं भगवान। और जो अब पहले एग्जाम्पल दिया भगवान किसी को जन्म भी देते हैं, किसी और को जन्म देते हैं, तो उनको पत्नी की जरूरत नहीं पड़ती। अपने नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म दिया उन्होंने, तो सर्वशक्तिमान भी है इस तरह से। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये तत्वता समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हमें तत्वता समझना है, भगवत गीता से ऑथराइज करके कोट करके बोलना पड़ेगा। यस, अरविंद लोचन प्रभु जी। प्रभु जी उसमें बताया था कि भक्त्या माम अभी जानन्ति, कि बाय डिवोशनल सर्विस वन कैन अंडरस्टैंड। हाँ, भक्त्या माम में भी जानन्ति, यावन जश्नामि तत्वतः, उसमें भी तत्वतः वर्ड आता है। केवल भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर हम सुपरफिशियली समझने का प्रयास करते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए एक प्रभुपाद जी कोटेशन दिए हैं शास्त्रों से कि हम सुपरफिशियली कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने मेथड से। प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के
प्रभात ब्रह्म संहिता का श्लोक का उच्चारण करते हैं कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम न विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तम। प्रभात बता रहे हैं कि कोई एरो मतलब हवा के रथ पर बैठ करके और मन की गति से भी अगर भगवान को जानना चाहेगा, भगवान तक पहुंचने का प्रयास करेगा, तो वो भी भगवान के नख कमल की मतलब जो चरण कमलों के नाखून है उनकी ज्योति को ही प्राप्त कर पाएगा बस, उससे ज्यादा कुछ उसे भी नहीं प्राप्त कर पाता। हाँ, यस। और एक और कोटेशन दिया, दूसरा भी ब्रह्म संहिता से है, वो एक और कोटेशन है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ये दिए हैं। ठीक है। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति को किस प्रकार से किया जाता है, भक्ति को प्रभुपाद जी कैसे डिफाइन किया है। प्रभुपाद जी भक्ति के नवदा 9 लिम्स बताए हैं कि हाँ। फिर बोलें कि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, विदाउट श्रवण यू कैन नॉट डू भक्ति, प्रभुपाद जी समझाएं। तो यस, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अंगा out of the nine, what is the most important anga of this navda bhakti? श्रवण। प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रवण बोले हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर श्रवण नहीं है तो कीर्तन भी नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी बोले कि ये 9 के 9 बहुत पावरफुल है, तो उसको क्या समझा रहे हैं कि ये 9 के 9 एलिमेंट्स अगर एक भी कोई कर ले तो भी सक्सेस प्राप्त हो सकती है, इसमें कैसे समझाते हैं प्रभुपाद जी। बताओ। पीछे अरविंद लोचन प्रभु जी इसमें बता रहे थे कि किस प्रकार से जैसे श्रवण के माध्यम से परीक्षित महाराज ने अपने जीवन को सक्सेसफुल किया, चैंटिंग के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी और स्मरण के माध्यम से प्रहलाद महाराज। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अगर कोई ऐसे करेगा तो कोई भी एक अंग को अच्छे से करेगा तो वो अपने जीवन को सक्सेसफुल कर सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नो के नो हम नहीं कर सकते, करेंगे तो बेस्ट है, बट एक भी अच्छे से करेंगे तो उससे भी जीवन परफेक्ट हो सकता है। तो हमारे लिए एक साधक के लिए क्या रिकमेंड है, एक ही चीज करना या सब कुछ करना? सभी करना चाहिए, और सभी इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि वो जो एक में बहुत एक्सपर्ट थे वो एब्जॉर्प्शन से कर पाए एक को, हम एक चीज को एब्जॉर्प्शन से नहीं कर पाएंगे, है ना, उस तरह से। इसीलिए हमें सारे एलिमेंट्स को, हमें भक्ति के अंगों को करना होता है। जो रूप गोस्वामी हमें 64 अंगास दिए हैं और चैतन्य महाप्रभु पंचांग भक्ति दिए हैं, उसमें सारे नवदा भक्ति के एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, श्री जन्माष्टमी उत्सव की जय। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। हरि बोल। जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय शील प्रभुपाद की, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्णा।